and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes when Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर No, I'll tell, wait, sir, wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं. Lekin, sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. In education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just हाँ मानावाड़ी हाँ साहब मानावाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम. आई वाज जस्ट कमिंग, द कॉन्ट्रैक्टर सेड सर वो प्रोग्राम करा है, अब तक पैसे नहीं दिए. जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब. एंड शॉकिंग फिगर्स आर, सर द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन 24,000, सर. अगर इफ वी हैव टू सी, सर, द ड्रिंकिंग वाटर, देर आर मोर देन 10% स्कूल जहां पे ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट देयर. कंपाउंड वॉल, सर, स्कूल्स में नहीं है, आर 34%. सर, इलेक्ट्रिसिटी जो स्कूल्स में नहीं है 6%, प्लेग्राउंड जहां नहीं है वहां 40%,
कंप्यूटर रूम्स जहां नहीं है 38%, टॉयलेट्स जहां नहीं है 12%, एडिशनल क्लासरूम्स 8%, साइंस लैब जहां नहीं है वहां पे 79%. सर, so I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And finally, going ahead, sir, I would like to speak and conclude by saying about the Waqf Board, sir. Waqf Board and the Home Department, I would say, sir. Sir, Waqf Board. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है. सर, ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है, सर. 22 years, सर. 22 years, सर, ही इज इनटू माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट. अब बड़े बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 years से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, ही इज इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, ही इज इंचार्ज ऑफ हज, ही इज इंचार्ज ऑफ वक्फ बोर्ड. उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए, सर. 22 साल से है. ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं. मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट. बट 22 years, sir, he is going to be now he wants to become a CEO now. He wants to become a CEO, sir. Sir, you would be surprised, sir, there is one work property at Abbots by the name Moin Manzil, Honorable Speaker, sir. Through you, I would like to bring to the notice of the Honorable CM Saab. CM साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि एबिट्स पे एक मोइन मंजिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया. वक्फ बोर्ड इन कोल्यूजन with the people who want to take that property which was registered वक्फ property, which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके स्टे मिला, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई. वक्फ बोर्ड and that owner, they make me a party and they went to the court, sir. I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए. वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया. The Chief Justice gave left and right to the Waqf Board Council, sir. Left and right. How do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. सर, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं, सर. वक्फ के प्रॉपर्टीज, they've lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf Board had lost the case, sir. Ali Saad Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf Board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे. उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब. साहब, अब तक CBCID की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे. ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे. लेफ्ट एंड राइट, सर, वी आर लूजिंग केसेस. सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf Board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf Board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf Board, sir. I am telling you, sir. If the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf Board can take care of the Muslims. Their poverty can be finished, sir. Education ka, employment ka, हर एक चीज का जवाब Waqf Board में है, sir. Please, sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये Waqf Board का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है. जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे. Sir, from last 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf properties, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana,
Sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me. The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this land doesn't belong to Waqf Board. Sir, I went to the Supreme Court also. We fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir, please protect the Waqf properties, sir. सर, वक्त प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको। आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा। किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए। पूरी वक्त तबाह हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए, बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद। Sir, nobody was also allowed to go and open the lock, see the records, fight the case. फिर मैं जाके लॉक को थोड़ा खोला जाकर, बोला कुछ नहीं। यह हाल था सर। बेशक साहब दोस्त थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाअल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे। हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं। हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है। हमने दोस्ती के जरिए मुसलमानों के लिए हासिल भी किया है, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी किया है। हां बेशक बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सारे काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आज देखेंगे तो हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है। सर, आई रिमेंबर सर, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस हाउस, द माइनॉरिटी बजट वाज ओनली 5 crore, sir. So I was just surprised. Then to my surprise and to my happiness, it was made 29 crores. I was very happy, sir. But sir, चाहे राजशेखर रेड्डी से दोस्ती हो, हमने खुल के दोस्ती की। रोशैया से हो तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की। अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे। मगर एक बात है कि अगर आज 3000 करोड़ का बजट अगर मुसलमान अक़लियतों का अगर इस रियासत में है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3000 हुआ। अगर मजलिस ना होती तो शायद आज कुछ ना मिलता। रिजर्वेशन भी मिला। आई नो दैट कि मजलिस की कामयाबी है। कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, there they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the need is that the presence of MIM is must for the welfare of the community and the justice for the Muslims. और मैं ये भी बात कहूंगा कि इनके दौर में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। आप वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock इज द डेडलाइन।
9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा. इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ. चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then Commissioner of Police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you're right. Our officers were wrong. I'm sorry for it, and I'm going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the Commissioner of Police who's there today, and the Commissioner of Police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए. वाह, क्या है साहब, क्या है. अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है. हम तो नहीं सर. तो वो कैसा निकाले सर? Police no sir, you're wrong sir. My learned friend, you're wrong sir. You're wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah. Because he's Amit Shah. बड़े भाई के भाई, बड़े भाई के भाई. अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है. खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है. पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप. लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है. सर, आई हैव द राइट टू लिव. I have the right to live. I have the freedom in this country. After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हाला कर दिए. पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा. मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा. तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, and that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर. पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता. गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा. चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर. और अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए. करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है. नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है. आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलरली बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द menace ऑफ दिस ganja drug sir. We will lend our full support sir. But let me tell you sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर. सब मालूम उनको सर, सब मालूम. लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए. इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए. हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे. और चीफ मिनिस्टर साहब, आप मौजूद नहीं थे, तो मैं एक बात कहा था
कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, बजट स्पीच में आना था ना साहब, कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट। तो काइंडली सर इस पर देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा, और यहां का जो पर कैपिटा आज है ये और आगे बढ़ेगा, और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी मेट्रो, और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से मेट्रो आई। हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते, लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए। और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब, मेट्रो आएगी यकीन है, और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा, और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, और हम ताउन करेंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे। उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा, और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री కూనమనేని సాంబశివరావు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, 1 minute. స్పీకర్ సార్, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి మీద పెట్టిన కేసు పోలీసులకు వాళ్ళు తీసిన విషయము ఇవన్నీ కనుక్కుంటాము. అయితే వారు ఒక ఆరోపణ ఏదైతే చేసిండ్రో ఆ ఆరోపణ సరైనది కాదు. అమిత్ షా గారు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, బీజేపీ నాయకులు ఎన్నికల సందర్భంగా చిన్నపిల్లలతో ప్రచారం చేయించిందని ఫిర్యాదు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు జి నిరంజన్. నేను అధ్యక్షుడిని, ఆయన ఉపాధ్యక్షుడు. ఆ రోజు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించి చిన్నపిల్లలను ఎన్నికల ప్రచారంలో వినియోగించిందని అమిత్ షా గారి మీద, కిషన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు కట్టండి అని ఫిర్యాదు చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేను అధ్యక్షుడుగున్న పార్టీ. ఆ ఫిర్యాదు మీద ఎఫ్ఐఆర్ పోలీసులు చేసి, ఆ ఎఫ్ఐఆర్ విచారణ సందర్భంగా ఛార్జ్షీట్లో అక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన నిర్వాహకుల మీద ఛార్జ్షీట్ వేసి, అక్కడికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన అమిత్ షా అండ్ కిషన్ రెడ్డి గారిని ఆ ఎఫ్ఐఆర్లో నుంచి పోలీసు అధికారులు తొలగించడం జరిగింది. తక్షణమే కాంగ్రెస్ పార్టీ తొలగించిన అధికారులకు వ్యతిరేకంగా కోర్టులో ఫైల్ చేసి కంప్లీట్గా వారిని కూడా ఇందులో కొనసాగించాల్సిందే, వారిని ఛార్జ్షీట్లో తొలగించడానికి వీల్లేదు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యాయ పోరాటం మొదలుపెట్టింది. కాబట్టి ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి పెద్దన్న లాంటి వాడు. మీరు వివిధ రాష్ట్రాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం అనుమతులు, అభివృద్ధి కోసం నిధులు మీరు ఇవ్వండి, మీరు పెద్దన్న పాత్ర పోషించండి. ప్రధానమంత్రి అంటేనే పెద్దన్న, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులందరినీ సమానంగా చూడాలి. మీరు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, మీరు ఉత్తరప్రదేశ్కి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, బీహార్లో మీ పొత్తుల ప్రభుత్వంలోకి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఆ విధంగా నిధులు ఇవ్వాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ₹1 పన్ను చెల్లిస్తే 43 పైసలే తిరిగి మాకు వస్తున్నాయి. అదే బీహార్ రాష్ట్రం నుంచి ₹1 పన్ను చెల్లిస్తే ₹7.26 తిరిగి బీహార్ రాష్ట్రానికి మీరు నిధులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్కు ₹6 పైచిలకు ₹1 ఉత్తరప్రదేశ్ కేంద్రానికి పన్నులు చెల్లిస్తే ₹6 పైగా ఉత్తరప్రదేశ్కు మీరు నిధులు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి వివక్ష చూపించకుండా ఒక పెద్దన్న తరహా
రాష్ట్రాలను సమన్వయం చేసుకొని అభివృద్ధి చేయడానికి సహకరించండి అని నేను ఎక్కడో చెవిలో రహస్యంగా